a pleasure. It's an honor to be here. I'm really very very lucky and in gratitude to Almighty कि इतने बड़े panel पे मुझे आज मौका दिया है. So thank you Business World, thank you Happy Hotelier Club, thank you Almighty and thank you to all you beautiful creative people. अंग्रेज़ी में बात नहीं करेंगे, अंग्रेज़ी तो सब बोल ही लेते हैं. हम मातृभाषा इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू का इस्तेमाल करेंगे. आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Good, good. Shall we start from Chef Sambhavi because she is the Shakti, she is the Devi here, and it's such an honor to have you here. घरों में हम लोग हमेशा बड़े होते हैं देवी को पूछते हुए और देवी हमें पाल के बड़ा करती है. And it's rare to have women in the kitchen in professional format. It's mostly dominated by men, as we all know, as we can see. So it's very special and it's an honor to have you here. Sir. आपका तारुफ, आपका introduction. Thank you so much. I'm Sambhavi Joshi. I am a chef and I run a pasta brand. We make different pastas for hotels and restaurants. हम और बहुत सारे other chefs के लिए भी काम करते हैं. And we make about 80 type of different pastas and that are not just Italian. They're very infused. Whether they have a Japanese touch, they have an Indian touch, like Chef Nishant makes me make all the craziest Indian pastas and it's so much fun. So yeah, that is what I do. Thank you. Beautiful. Thank you. घर में भी खाना बनाते हैं? घर पे यही काम करवाती है मेरी मॉम मुझसे. Expectations बहुत बढ़ जाती है ना? कुछ ज़्यादा ही. बाहर वालों को खिलाती, घर में नहीं खिलाती. Exactly. He's like अच्छा नहीं. So exactly what my mother-in-law also says कि अच्छा घर में तो अच्छा खाना बनेगा हमेशा. सही बात है. Ma'am, when you do plating of pasta, because since we are talking about plating, we're talking about presentation. From the days of your childhood to your professional excellence now, what is that has changed, or what is that you do to bring that creativity, to bring that appetite कि आपका pasta देख के wow आ जाए? So I think this is a really interesting question because my mom always says everything comes back to a circle. As a kid, we've always seen, because I got all my instinct of cooking, of loving food came from my mom. And you know, her food was very simple and nice. Cut to 15 years later, 20 years later, went to culinary school, went to Michelin star restaurants, बहुत ही fancy, सब कुछ, मतलब 20 elements, इधर से एक फोम, उधर से एक जेल, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो रहा है. एंड यू नो एक प्लेट बनाने में 30 मिनट्स लग रहे हैं, प्लेटिंग की प्लान हो ही जा रही है. एंड आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ फूड दैट काइंड ऑफ इट गॉट मी इंटरेस्टेड. इट वाज वेरी इंट्रीगिंग बिकॉज इट वाज मोर artistic than it was food. But again, going back to what I said, it comes back to a circle because now when I look at food, it's 5 elements. It's so simple. You let the ingredients speak. जो है जैसा है, जितना कम आप उसके साथ करो उतना better. So I think that's kind of the way my progression has happened over the years. Brilliant. Thank you for your insight. It's a brilliant start, and it's now in my head I'm thinking who should I go to, because there is a gentleman who's a celebrity chef and a master chef. They're all celebrities in their own forum. His name is Gautam Chaudhry. I remember 21 years ago when I met him first time in Lucknow. He happens to be from same college और हमारे senior हैं, तो हम इनको 3rd degree में प्रणाम करते थे और मेरी ragging भी इन्होंने ली थी. पर आज मैं इस प्लेटफॉर्म से इनसे बात कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत गूज़बम्स भी हो रहे हैं बिकॉज बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ. तो और यहाँ पर एक शेफ़ सुधीर हैं जिनके साथ मैं प्रोफेशनली अलाइन हूँ एविएशन फॉर्मेट पे. आप बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ़ रह चुके हैं फ्लाइट किचन में, तो ये भी बहुत अमेजिंग एनर्जी लेके आते हैं. और इनके शेफ़ कोड पे लिखा है फीड योर हार्ट. दिल वाले शेफ़ हैं ये. So I don't know where do I start from, but I think I would go back to my academic association because नहीं तो मुझे फिर ragging देनी पड़ेगी. So over to you, Chef Chaudhry. Briefly your journey, sir, and from the days of IHM Lucknow where we met and had your khichdi, beautiful khichdi, hand curated, handcrafted. I remember in that beautiful kitchen of yours, to now where we are talking to each other. Your journey briefly, and what does this plating is all about from that journey which we used to do in Lucknow to what you do
now? So I think it's a big subject. A lot of questions. I think we'll take half an hour to answer this question. But to start with, I think commendable work. What this gentleman over here has been doing. He's always been a very, very good orator. I still remember him since that 2001 when he joined the college. 98, sir. Sorry. 98. Badam thode aur khaiye, please. So time really flies. Absolutely, time flies. Well, my name is Gautam. I operate a catering company. We do luxury setups in terms of catering all across the globe. We do destination weddings, we do events all across. We have recently opened, in fact, 4 days back, 10th of this month, we opened our third kitchen operations that is in Raipur. So we operate one in Gurgaon, one in Dubai, and the third operations has started in Raipur now. We have plans in next probably 5 years to go multi-cities. We will have presence in majority major cities in the country. So that is what the target is. We do catering का जो season है वो शायद 5 महीने रहता है, तो we do a lot of consultancies. So we help people set up restaurants. This is in a nutshell. This is about me. In terms of plating, I think शायद जब हमने start किया था उस वक्त plating के concepts बहुत ज़्यादा होते नहीं थे. They were in Indian food. It was more of a bowl service. You know, it was more of community dining. It was more of कि हम 6 लोगों की फैमिली बैठी है तो हमने 2 चावल मंगवा लिए, 2 दाल मंगवा ली, 1 राइस मंगवा लिया, उसके ऊपर एक धनिया पत्ते की गार्निश हो गई, एंड दैट यूज्ड टू बी और धनिया पत्ता वो चॉप किया हुआ, नॉट द होल स्प्रिग द वे वी डू इट दीस डेज, बट you know, that's where we started from, and I think today it's a different world. In last 25 years of my passing out of college, I think there is a lot that has happened. So as Sambhavi was mentioning that, you know, it takes a full circle. So we've seen very, very intrigued platings, very, very different setups, very, very tedious setups. And now has the time that has come where, you know, classic, so हम जो plating को divide करते हैं, and we will talk much more in detail during the process. So there are classical versions, and then there are nomadic versions or the current trends. So इसके बीच में बहुत सारे processes हैं, बहुत सारे steps, and that we'll talk about. Great, thank you. I love the way you say कि धनिया और मिर्ची, and the fact that धनिया और मिर्ची आज भी इतने important ingredients हैं. Especially I remember Chef Ranveer Barar, which we all know, and we take the pride that he is from the same college as we are. Chef Barar, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो thank you for doing what you do. धनिया को उन्होंने national level पे एक मुहिम चलाई थी कि वो धनिया को recognize किया जाए as a very important ingredient in our kitchen. So yeah, धनिया और मिर्ची. उसमें एक बात याद आ रही है कि मेरे पिताजी जब सब्जी लेते थे, हम सारे दिल्ली वाले ऐसे ही हैं वैसे ना, अगर वो मिर्ची और धनिया फ्री नहीं मिलता तो हम बदल देते हैं सब्जी वाला, है ना. Coming to you, Chef Sudhir, आप फ्लाइट किचन में हैं, रहे हैं काफ़ी साल, एंड ऑफ कोर्स यू हैव ब्यूटीफुल जर्नी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू यू जब हमारी वर्कशॉप्स होती थी फ्लाइट किचन की. फ्लाइट किचन के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में प्लेटिंग बहुत अलग होती है, क्योंकि जो आप बनाते हैं और जब हम 35,000 फीट पे उसको सर्व करते हैं, खासकर प्रीमियम कैबिन्स में, तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. गैली में, गैली किचन को बोलते हैं हवाई जहाज़ के अंदर 35,000 फीट पे, चाहे वो बोइंग हो या एयरबस हो. तो what is that you do specifically in flight kitchen, and of course with your journey, जो औरों से हटके है और जो कि है वो फैक्ट है, वो उसके बारे में आपसे हम जरूर बात करेंगे, but briefly if you can tell us about that. So I'm Chef Sudhir. I work for a company called Travel Food Services now, and my association with Flight Kitchens is about 15 years. So I think जो आप question पूछ रहे हैं ना, for these people, they think, they plate and they serve. For us, people in the airline aviation industry, we think and we ask these guys to serve. So जो मैंने सोचा है वो इन्होंने करना है, तो बड़ा difficult task है. मैंने सोचा कि ऐसा दिखेगा, पर ये actually कुछ और कर देते हैं, और फिर बाद में मेरे पास question आता है ये क्या है. तो that's how it is. But anyway, so हमारे लिए challenge क्या होता है कि we have to explain to everybody and every kind of person कि
हमारी प्लेटिंग कैसे होगी और हाउ आई एम लुकिंग एट इट, हाउ आई एम एनविसाजिंग, एंड यू हैव टू कॉपी इट. सो दैट इज़ द डिफरेंस. मेरे थॉट कुछ और होगा, इनका थॉट कुछ और होगा. वो सोचेंगे ऐसे करता हूँ तो अच्छा लगेगा. तो वो हमें उनको एक गाइडलाइन देनी पड़ती है कि जैसे हमें कॉलेज में सिखाया जाता था कि पुट योर प्रोटीन्स एट 10 o'clock, 6 o'clock, put your potato starch at 10 o'clock, put your vegetables at 2 o'clock. वैसे वाला हम लोग कॉलेज में करते थे. अब हम इनके साथ भी ऐसे ही करते हैं कि पहला फर्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पे प्रोटीन रखो, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे ये गार्निश करनी है, लास्ट में ऐसे करना है, सॉस ऐसे डालनी है. सो दैट प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस विच वी हैव टू फॉलो एंड दैट्स हाउ इट इज़. पर मेरी संभावी जब बात आ रही थी मिशेलिन वाला, तो मैं एक क्रूज़ लाइन में काम करता था 95 98 में. 3 years आई वॉज देयर. सो हमारे एक शेफ़ होते थे आयरिश शेफ़ हिडन. ही वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विद प्लेटिंग एंड वी यूज टू डू स्मोक सामन प्लेटिंग करते थे. उनका फेवरेट उनका वो होता था एपेटाइजर. एंड वी यूज टू पुट 36 आइटम्स ऑन दैट प्लेट. एंड ऑन अ क्रूज लाइन वी हैड 5,000 पैसेंजर्स. So I had to make around 4,000 plates because कुछ vegetarian होंगे, कुछ और opt करेंगे, पर most popular was smoked salmon. So those 4,000 plates and you have to put 36 items in each plate. It was a nightmare. First time we did, after that we said, sir, sorry. Either we start 36 on a plate. Plate का size क्या होता था? 3,000 plates. 36 items on the dinner plate, 10 inches. Wow. That's off. That was a nightmare. उसके बाद हमने बोला, sir, sorry. Either we start one day earlier or we don't do this. Thank you so much. That's so beautiful. शेफ चौबे, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, वेरी दिल के शेफ हैं आप? हाँ हाँ. बताइए दिल से क्या बताना चाहेंगे आपकी जर्नी, बिकॉज़ ये आपका जो लोगो है ना, फीड योर हार्ट, या ये बहुत सुंदर है, बहुत तो amazing सबसे पहले है. तो जोहार एवरीवन. यू नो आई कम फ्रॉम झारखंड, सो हमारे यहाँ जोहार बोलते हैं. सो आई वुड लाइक टू यू नो थैंक यू एंड आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस लवली सेशन. और मैं करीबन 23 ईयर्स हो गया मेरे को शेफ़ में. और मैंने अपनी जर्नी, आई नेवर वांटेड टू बी शेफ़, फ्रैंकली स्पीकिंग. मैं कभी नहीं बनना चाहता था. आई ऑलवेज हैड सम अदर यू नो थिंग अबाउट मी. और मैं कुछ नहीं बना तो मैं शेफ़ बन गया काइंड ऑफ, यू नो. सो एंड देन यू नो आई वाज नॉट वेरी गुड इन माय कम्युनिकेशन स्किल. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई चूज़ किचन, बिकॉज किचन में पीछे यू नो छुप के रहना है, गेस्ट से बात नहीं करना है. बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, यू नो. नाउ वी आर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू एंड नो वी हैव टू कम्युनिकेट एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू. एंड प्लेटिंग बहुत ज़रूरी है, यू नो, आज के डेट में. फ्रैंकली स्पीकिंग अब वो एरा ख़त्म हो गया जब आप प्लेटिंग नहीं करते हो. अभी आप यू नो स्पेशली इंडियन फूड इज़ नॉट टर्म्ड एज प्लेटेड फूड, बट इफ़ यू लुक एट यू नो द रेस्टोरेंट्स विच आर डूइंग वेरी वेल. अगर हम गगन की भी एग्जाम्पल ले तो जो आज किया उसकी प्लेटिंग बहुत अच्छी है, यू नो. आई मीन वी हैव टू एक्सेप्ट दिस. अभी मैं मलेशिया में था, आई वेंट टू नाडोडी और उन्होंने 23 प्लेट्स मुझे खाना खिलाया. सबकी प्लेटिंग बहुत सुंदर थी. पहले आप आंखों से खाते हो, कहीं ना कहीं आपको अगर रिस्पेक्ट देना है तो वो आपको करना पड़ेगा, यू नो. इट इज़ नॉट व्हाट वी वांट, इट इज़ व्हाट पीपल वांट, यू नो. वी आर पीपल शेफ. और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. बट प्लेटिंग का मतलब ये नहीं कि आप उसमें जो उसका मेन हाईलाइट है उसी को छुपा दो. सो इफ़ यू हैव बटर चिकन इज़ द हाईलाइट एंड नॉट द ग्रेवी. समहाउ व्हाट आई ऑब्जर्व इज़ कि हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन जज करते हैं, उस टाइम यू नो they load with so much of garnish and all that Amitabh Bachchan is hidden. You know, Prem Chopra is on top. So that is not the right movie, okay? The movie is a flop. So no, it is very, also I request all of you, whoever cooks in, you know, this, and who also wants to cook, less is more. जितना कम करोगे उतना अच्छा होगा. White is the most acceptable thing in this world. हम लोग भी white jacket पहने हैं. Why? Because you know, it is very nice. White plate is the most acceptable because उसमें आपका खाना दिखता है. You know, we need to keep all these things because we need to take our food to the next level, and it is important to plate it nicely, plate it clean, hygienic, okay, not like you know putting everything loaded and then बिना interest के. Also you know we need to explain. मैं बहुत travel करता हूँ, मैं ये देखता हूँ खाना बनाया तो है और उसका explanation बहुत अच्छा है, you know. The entire, we are rich in our history, civilization, our heritage. We have amazing stories to share to this world. So I think we should tell. I just created Champaran mutton curry in Malaysia, Kuala Lumpur, and I found it absolutely amazing. And people want to understand our history. तो जब आप कुछ खाना बना रहे हो तो उसको अच्छी तरह से communicate करो, उसके बारे में बताओ. You know, otherwise how will people who are coming to us will understand, especially Indian food. Because see, I am an Indian. I love to make biryani than risotto. Of course, I mean.
I have worked in European cuisine more than Indian, by the way. I'm an ex-Olive, ex-Roseate. I have done, different work around the world in European cuisine. But yes, I like to understand my food in also a little bit of, European influence. I keep it. I love it. I think it's important for us to enjoy what we do. At the end of the day, it should be happy face. And we should, of course, work with a lot of love, with a lot of affection, with a lot of commitment, with a lot of passion, a lot of interest. We have some amazing historian with us. मेरे एक historian है, Dr. पुष्पेश पंजी. अगर उनके पास आप जाओ तो पैनल में कोई नहीं बोलेगा, केवल वही बोलेंगे. Okay? And he is very, very amazing. So I thought I'll just let this. Thank you. I think आपने nutshell में मेरे 3 important points जो अंग्रेजी में मुझे दिए गए हैं उनको टच कर दिया है कहीं ना कहीं. आपने कलर पैलेट की बात की, आपने बोला आंखों से खाने की बात, बहुत सुंदर आपने टच किया. प्रोपोर्शनल स्केल की बात आपने कर दी कहीं ना कहीं, और टेक्सचर और हाइट की भी आपने बात कर दी. नाउ दीज 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर आई थिंक जहन में आते हैं जब आप मेन्यू डिज़ाइन करते हैं, जब उसकी प्लेटिंग. सो कलर पैलेट, प्रोपोर्शन, स्केल और टेक्सचर और हाइट की हम बात करें, शेफ शाम्भवी आपसे बात करें तो इन वेरी ब्रीफ व्हाट इज़ दैट कम्स टू योर हेड when it comes to color palette, proportion, size and texture and height when you presenting your food on a palette to make it appetizing, to make it appealable. Because कुछ जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं ना कई बार हम लोग, खाना आता है वैसे बीमार होते हैं और यार ये क्या खाना है, देख के यार ये क्या खाना है. So that is what I think you just said, both of them have touched on, whether it be aircraft, whether it be any other format, please. I think exactly what Chef Nishant said. Number one is you eat with your eyes first, right? And for me, my motto of presentation, like I said, over the years has changed. So it is whatever you can do least to the ingredient is how I like to present it on a plate. I think I'm also on the same page when it comes to plates. I think today people are plating on the most randomest things. एक marble ले आए, एक slab ले आए, एक पता नहीं कोई wood का piece दे दिया, एक पत्थर के ऊपर डाल दिया. Honestly, those are the kind of things I just don't understand. White plates is classic and it's the best. Today you even go market में घर पे खरीदने के लिए भी blue plate बनती है. मतलब I don't understand it. I just don't understand it. So I think for me, first is the choice of crockery that you're picking out. That is really important. And even when it comes to the height of the dish, it is defined by the piece of crockery. Like, of course, we do a lot of pasta work. So if you're plating a pasta, something as basic as a spaghetti, सब plate करते हैं spaghetti. वही आप एक बहुत ही गहरे bowl में डाल दो, than you putting it in a bowl with a slight height, or you're putting it on a flat plate. It just changes the way the entire plate is being put out. So I think first is choice of crockery, which is what will define what is the height of the food that you're going with, what is the texture that you're going with. Again, just giving another example of texture. अगर आपके पास एक बहुत गहरा bowl है, आपने उसमें सारा texture आपने उसमें कुछ crunchy डालना, आपने ऊपर से pasta डाल दिया, it's gone. So the idea is to pick the right plate where you have some amount of the pasta. There's still a little bit of space around the plate to get a crunchy element which is not being soaked in your sauce. There is that scope of giving height in accordance to the plate. So I think those are the few things that I look at. And then of course, the beauty of a white plate, exactly what Chef Nishant says, and I'm just going back and saying कि on a white plate everything pops. आपको कुछ ज़्यादा effort करने की ज़रूरत ही नहीं है, खाना खुद ही बोलेगा. Like that is, I think, one thing that that is my philosophy of plating. Beautiful. You've touched a beautiful point. I think you're all on the same page, and you're all looking very dashing in your white chef course. I wish I could wear the same. But classic is beautiful. Less is more. आपने बोला, और बहुत YouTubers, bloggers और फलाने ढमकाने अपने नाम पता नहीं अजीब से रखते हैं और अजीब सी प्लेटिंग करते हैं, तो सारा फोकस प्लेटिंग पे चला जाता है ना. जब हम उसको खाने को बैठते हैं तो फिर एक ही चम्मच के बाद हम कहते हैं थैंक यू, दिस इज़ ब्यूटीफुल. ऐसा मैं वर्कशॉप्स में करता था कई बारी. सो व्हाट यू मीन टू से इज कि इट्स मोर टू डू विद क्लासिक, इट्स मोर टू डू विद व्हाट हैज़ बीन ट्रेडिशनली द प्रिंसिपल ऑफ प्लेटिंग. उस पर ज़्यादा हमारे को एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. इज़ दैट व्हाट यू सेइंग? Yes, I think, but that's not just with plating. That's also, again, सबकी philosophy खाने की अलग होती है. Like chef said कि उनके कोई chef थे जो 36 elements करते थे.
I worked for a restaurant जहाँ पे एक हमारा salad होता था, उसमें 18 elements जाते थे. मतलब क्या ही डाल दिया आपने salad में 18 elements में क्या ही कर दिया? I just don't understand the concept. So I think the least that you do with your, I think अगर आप देखो a classic Caesar, 4 ingredients, 5 ingredients works much better, sells much more. Even if you go to a restaurant, you look at like these fancy fancy dishes और आपके पास एक Caesar है, आप अपना report निकालोगे at the end of the day Caesar ज़्यादा बिकेगा. आप अपना butter chicken का देखो, butter chicken ज़्यादा बिकेगा than like butter chicken in a naan cone with some foam. So again, that's just my philosophy. No, of absolutely. I'm food. with you on that page. But you know, ma'am, interestingly क्या हुआ है कि यही बटर चिकन अगर विदेश में जाता है तो वो नेशनल डिश बन जाता है और उसका नाम रख दिया जाता है चिकन टिक्का मसाला. इंग्लैंड की, ब्रिटेन की ये नेशनल डिश बन गई है. इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, बहुत सारे इस पे कंटेंट हैं. आप सब देखना चाहेंगे तो ज़रूर देखिएगा. एंड सिंस आई ट्रैवल टू दैट कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 20 years और वो एक सेकंड होम बन चुका है, तो उसको उन्होंने नाम ही अलग रख दिया. उसमें थोड़ी सी उन्होंने हेरा फेरी की है और उसको नेशनल डिश बना दिया और वो अपनी डिश बोलते हैं. है वो बटर चिकन ही, कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर. गोइंग बैक टू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, 56 भोग की हमने बात सुनी, हमने राजे रजवाड़ों की बातें सुनी, हमारे जो शहनशाह बादशाह महाराजा होते थे, और हम जब भगवान जी को भी भोग लगाते हैं तो हम एज मच ट्राई करते हैं कि उनको बहुत सारी एक थाली के अंदर छोटी छोटी कटोरियों में. अगर मैं उस बात करूं तो वहाँ पे भी बहुत सारा इंग्रेडिएंट होता था, बहुत सारा प्लेटिंग होता था, बहुत सारा, बट लाइक यू सेड कि लेस इज मोर, उसमें थोड़ा थोड़ा होता था. आप भगवान जी को सारा कुछ अर्पण करते हैं, आप ट्रीट करते हैं अतिथि को कि यार लैविशली कितना दे सकते हैं, तो एक वो पर्सपेक्टिव भी होता था. आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी एक नज़रिया है जब हम प्रेजेंट करते हैं. So I think जब मैं कहती हूँ less is more does not mean less चीज़ें खाओ, but I think it's the least you do with your product. अब आजकल आप एक छोटी सी for an example, there is something which has been very trending is these leathers. आजकल हर डिश में एक लेदर जाता है. I recently tasted a dessert, उसके ऊपर था एक raspberry leather. मतलब पहले आपने रास्पबेरी ली, फिर आपने उसको प्यूरी करी, फिर आपने उसको प्रोसेस किया, फिर उसने आपको उसको एक लेयर बनाया, फिर आपने उसको ड्राई किया, बट है तो वो रास्पबेरी ही. सो आई थिंक फॉर मी आई वुड रादर हैव एक रास्पबेरी दैन हैव अ लेदर विच इज सो प्रोसेस दैट इट काइंड ऑफ there is no what is the soul of the entire ingredient is gone. That is what I mean when I say ki less is more. The least you just let the food shine. Like naturally food is so good in itself, the ingredients are so good, so the least you work with it is how that's my take. No, Yeah. no, absolutely, I appreciate it. Everybody has their opinion. I appreciate that. Coming to you, sir, Chef Chaudhry, इसी को carry forward करते हुए, there is another principle to plating which is about storytelling, about negative space. To be honest, मैंने ये आज तक concept मैंने भी नहीं सुना था negative space. मैंने Google से और एक और हमारे यहाँ पे सहयोगी है, मैं उनको ज़रूर thank you बोलना चाहूँगा. I'll be honest, प्रशांत जी, thank you for this, Chef प्रशांत, thank you for this, all this. मेरे हाथ में ना एक पर्ची है जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे. मैंने ज़्यादा होमवर्क नहीं किया हुआ, ये प्रशांत जी का होमवर्क है, and I don't want to take any credit for this. So प्रशांत जी, thank you wherever you are. He is the genius there. Yeah. ये शाम को 3:30 बजे बहुत मैजिक करने वाले हैं, आप लोग जाइएगा नहीं. ड्रमिंग, शेफ्स को अगर ड्रमिंग करते हुए देखना है, कभी नहीं देखा है, तो आज 3:30 बजे ज़रूर देखना है. ही इज़ द मैन बिहाइंड इट. जी, बैक टू यू शेफ. नेगेटिव स्पेस और ये जो मैम ने भी बोला, इसके स्टोरी टेलिंग, इसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है when you do so many? So it's a very interesting question, I think, Anurag. I remember I did a dish for a restaurant called Tanzor in Beverly Hills, for which we were recommended by Michelin. We did Hamara classical, if anyone knows what our Indian national soup is. What is the national soup of India, if anyone? टमाटर का शोरबा, घर घर में बनने वाला. That's a mulligatawny. It's a mulligatawny. It's a lentil soup, lentil and coconut milk. Mulligatawny. 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 Okay. So we did this soup in 2 formats. I'm talking about 2006. So we did this soup in 2 forms. One, the classical version, and then a progressive version of the same soup, which was beetroot scented. So there were 2 different colors. And we involved us time pe,
service engagement बहुत ज़्यादा चल रही है. So there is one segment that we have been talking about plating. But बीच में एक segment आया था जब service का involvement बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. And service को engage रखना, doing a small sort of a storytelling rather more than storytelling, an activity on the table की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. And we did, it was a pre-garnished plate. And then there will be a server who will come, who will crush some fresh pepper on the plate, and which will, वो negative space जो आसपास जो whiteness रह जाएगी plate के ऊपर, that is called the negative space. So उस negative space को हम दर्शाते हुए वो plate हमने सामने रखी. There is a second server who came in, who threw in some pepper, freshly crushed pepper from the pepper mill, and the third server comes in who's carrying two soups or rather sauce boats in his hand, and then he's pouring it. From two different sides, and उसका एक yin yang format में आता था, and it used such a beautiful soup, and we got a lot of raves for that soup. So I think यो negative space का aspect भी cover होता था, storytelling का aspect भी cover होता था. That was one time, that was one era which I still miss these days. आज हमारी शायद service engagement बहुत कम हो गई है. We do majority of the stuff from the background because service बहुत जगहों पे engaged रहती है, and we do not we know कि छोटे elements table पे बहुत सारे बढ़ गए हैं. ये मधुमक्खी पता है क्या करने आई थी? आपको bless करने आई थी. ऊपर वाला आपको bless कर रहा है. इतनी अच्छी खुशबू आ रही है आपके शेफ कोर्ट से. वो सब आपके इतने सारे लोग और वो मधुमक्खी पिन बनाते हुए. वो मधुमक्खी हनी लेने आई थी. ले गई क्योंकि आप लोग इतने मीठे हैं, इतने सुंदर हैं, इतनी अच्छी क्रिएटिविटी करते हैं. Thank you for that aspect. दिल वाले डॉक्टर साहब, दिल वाले शेफ, ये जो नज़रिया इन्होंने दिया है उसके बाद अटेंशन टू डिटेल की बात आती है और बात आती है कि सीजनैलिटी एंड फ्रेशनेस. ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात की जाए, तो आपका उस पर क्या नज़रिया रहेगा सर? No, I definitely agree with that. We should eat product which is seasonal, और also कहीं ना कहीं हम अपने आयुर्वेद को देखें तो उसमें भी इन चीज़ों का जिक्र है कि आप सीजन के अनुसार खाना खाएं. अभी आपने 56 भोग की बात किया था, तो वो जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना हम अपने टोटल मिला के अगर आप देखो तो एक जो क्वांटिटी है दैट विल नॉट एक्सीड द क्वांटिटी दैट वी शुड ईट. ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज. इट इज छोटे छोटे पोर्शंस में उसको डिवाइड कर दिया गया. अगर यही इंपॉर्टेंट है कि मतलब यू कैन नॉट ईट बियॉन्ड अ सर्टेन क्वांटिटी, एंड दैट विल ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ फैटिग इन द बॉडी. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं ये बोलूँगा कि जब भी आप अपने खाने की बात करते हो तो उसमें प्रोपोर्शन, टेस्ट, टेक्सचर, इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान. अभी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शेफ़ गिल आए हुए हैं, शेफ़ एम एस गिल, और इंडियन गवर्नमेंट ने दिस ईयर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अवार्ड. सॉरी, ये बहुत बड़ा नाम लिया है. शेफ़ गिल, आपका स्वागत है. गिल इज देयर. बहुत बड़े सेलिब्रिटी शेफ हैं हमारे बीच में. वर्ड ऑफ, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शेफ गिल? Thank you, Chef Gill. Sat Sri Akal. Happy Lodi. Welcome to you. A big welcome, sir. So he's a big name and he's going to do a big thing. Stay tuned for that also. So abhi, Chef Gill has invited us for a award function at ITC Moria. मैं उसका नाम लेना चाहूँगा. और जैसे मिशलिन स्टार है, इंडियन गवर्नमेंट ने अन्नपूर्णा अवार्ड स्टार्ट किया है. Okay. So they are awarding this year. They have awarded 6 restaurants who are doing authentic Indian food for 3 years in operation. Okay, तो उनको उन्होंने अन्नपूर्णा अवार्ड दिया है. और ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स को अवार्ड दिया है जो इथियोपिया से आ रहे हैं, कोलंबिया से आ रहे हैं, कोस्टा रिका से आ रहे हैं, जिनको कोई पहचान ही नहीं है, जिनको कोई नहीं जानता, बट उन्होंने इंडियन फूड को कनेक्ट किया है आयुर्वेद के साथ, जो करीबन 5000 साल का हमारा इतिहास है. और इस तरह की चीज़ों की बातें अभी मतलब की जा रही हैं. So next year also they are gonna do this, and we need to understand that that portion, texture, taste, color, appeal, seasonality, ये सब बहुत ज़रूरी है. और इसी तरह से हम लोग खाना खाते थे. अभी आप देखो तो मिलेट्स भी बहुत उभर के आया है, बट इट इज़ नथिंग न्यू. मिलेट इज़ नॉट न्यू टू अस. somehow what happened is that we forgot, और in between हम भूल गए. हमने कोविड को मतलब we invited COVID in our life, and we of course we suffered a lot, and now we are all talking about what we used to do. So I think we need to go back to basics and understand all these principles and then move forward. All these things that you're talking right now is part of our history, and we definitely should claim it, and we should show this world that how amazing we are.
टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे बार बार वहाँ से आ रही है उंगली की, पुत्र तेरे को टाइम नहीं है ज़्यादा। आपने बहुत सुंदर बात टच की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पूरे एस्पेक्ट में न्यूट्रिशन, वेलबींग, कोविड ने काफ़ी कुछ सिखा दिया कि हमारी इम्यूनिटी कितनी मैटर करती है। और आपने जो बोला वो बहुत सुंदर बोला है कि फ्रेशनेस, सीजनल। इंडिया में रहते इतनी सुंदर कुदरत है, इतनी भगवान ने हमारे को अबंडेंस दी है, और हम ऑलिव्स खा रहे होते हैं इतने महंगे, जबकि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में सरसों, मक्की, लोकल स्टफ इतना है। एक ज़माना था 70 के ज़माने का हूँ मैं बंदा, तो हम गर्मियों में गर्मियों की चीज़ खाते थे। आज हम मैंगो खा रहे होते हैं, मैंगो शेक पी रहे होते हैं, मैंगो लस्सी पी रहे होते हैं सर्दियों में। तो ऑब्वियसली बॉडी बोलेगी ना थैंक यू वेरी मच क्या। सो यू हैव टच्ड अ ब्यूटीफुल पॉइंट। 5000 साल का इतिहास है, प्लीज़ उस पर फोकस करें, बिकॉज हमारे ऊपर बहुत अबंडेंस है हमारी कंट्री में मदर नेचर की। एंड Can I take a second further developing on this concept? So Please. there's something which is called, शायद ये मैं कई दफ़ा इससे पहले भी कई दफ़ा बोल चुका हूँ. It is very important to understand कि हम आज जिसे organic farming के नाम से जानते हैं, उसका parent body या parent structure जो है वो biodynamic farming है. Biodynamic farming says that if not just that if cauliflower is supposed to grow in summers or in winters, then it should only be grown in winters, and then it should not be served in summers. That's not the only aspect. But it as well says that every soil is supposed to grow certain vegetables. So अगर वो दिल्ली के आसपास, दिल्ली के सराउंडिंग में समर्स में जो पर्टिकुलर सब्जियां ग्रो होनी चाहिए, वो एक इकोसिस्टम है. वो उसे इकोसिस्टम को हर हालत में लूप को क्लोज करना बहुत जरूरी है. नॉट टेक आई कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स ऑन दिस Absolutely, सब्जेक्ट, it's a huge topic in itself. आपने बिल्कुल सही बोला. So what you're saying is local is good, that is exotic, and seasonal is good. These are the two important points. शेफ, आप जब 35,000 फीट पे ये जादू करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए ये टफ हो जाता है बहुत, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं. वेरी क्विकली इफ यू कैन टच ऑन दैट पॉइंट व्हेन यू डिजाइन दोस काइंड ऑफ प्लेटिंग. So anyway, we keep that in mind. Seasonality 100% रखते ही है, availability, and one very important aspect I want to mention is the efficiency of our kitchens. So like I learned from my experience, 36 item एक plate में नहीं डालने, तो वो also we have to keep in mind, because especially when people like you or somebody else is plating our food, they have that limited time span. They cannot do one plate in 15 minutes. They have to do it in 5-10 seconds or something. So we have to keep that in mind also. Anyway, any kitchen efficiency has to be thought of, and they can do the skill level of the team you have. So all that also is a important part of our thought process. There's so many logistics, because if you're having a flight of say 13 to 14 hours originating from India going to all the way to transatlantic Canada or US, उन सारे logistics को Space is very limited. Yes. You have to have so many items, so you have to have a certain space for everything. You have to place them in the right place, so the guy who's going to plate will find it on time. ऐसा नहीं वो ढूंढ रहा है सारा time कि किधर है मेरा garnish. Exactly, and So like I must say, especially kudos to chefs who are doing this kind of work in the air or on the ship, because logistics are very different. Because आपके पास limited resources होते हैं, उसमें वो magic create करना, वो palatability create करना is a different ball game altogether. So very different. hats off to you on that. Wrap up करने के लिए बोल रहे हैं आप? I know. So बहुत सारे topics हैं, बहुत सारी बात हम कर सकते हैं. Nutshell में if amongst the audience I see there is a chef sitting there. I'm just gonna go to her because she is a beautiful chef, Chef Diwan. A big round of applause for what chef said and for all the ladies in the kitchen, because हम लोग बड़े ही उनकी वजह से हुए हैं. So जितनी भी ladies यहाँ पर हैं, जितनी भी देवियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, वो माँ की फॉर्म में हैं, वाइफ की फॉर्म में हैं, बहन की फॉर्म में हम लोगों को बहुत पैम्पर करती हैं. थैंक यू सो मच. टाइम आउट हो चुका है, मुझे डरना पड़ेगा. हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, बट थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस. इट्स एन ऑनर एंड इट्स अ प्रिविलेज to be hosting this show. And break के बाद फिर मिलेंगे. There are more happening, an entire day glued on to this event. Thank you.